So till now we have seen what exactly is facade design pattern, right? So facade is nothing but which provides you a simplified interface or the simplified view which hides the inner complexity of that system and gives you that simplified view to access, right? It creates kind of a mukhota, or probably it's kind of a face. जो बाहर से it looks very simple, straightforward, but internally it can possess many complexities, right? So a typical example is you have a service, let's suppose, okay, and probably you need to interact with multiple service, right? So let's suppose this is some kind of a save activity, and this is for some other activity, and this is for some other activity. So probably you can create multiple facade here, and what will the responsibility of this facade? To interact with all the operations of this save service, या फिर all the operations of this ABC service, and this particular class can be known as the ABC facade. Okay, so anywhere you are having some kind of an interface or probably some kind of simplified, it can be known as facade. In short, most of the design pattern is also a facade because in any way they hide the complexity from the user. They give the simplified representation to the user. जितने भी जावा में वो सारे एग्जांपल है, राइट, द प्रोबेबली द एसक्यूएल कनेक्शन वन एंड ऑल दोस थिंग्स, दोस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द फसाड डिजाइन पैटर्न. बिकॉज एसक्यूएल कनेक्शन में क्या होता है, they just provide you that connection interface. With that you can open connection, close connection, and whatever operations you want, and it hides the ड्राइवर स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्सिटी, राइट, कि जेडीबीसी कैसे इंप्लीमेंट करेगा या प्रोबेबली कोई और ड्राइवर है वो उसको कैसे इंप्लीमेंट करेगा. So in turn it hides the complexity of that system. So that is also a facade. So theoretically it is probably an interface or simplified view which hides the complexity, can be a facade. Practically you any of the class, right, क्योंकि देखो it's not always from the client. तुम्हारे कोड का भी, let's suppose this is your service and this is your service, right? So probably the caller of this service is your this service, right? So this is also a client for this service. So if this you are creating some simplified view to be accessed by this particular service, it is also a facade. ठीक है, clear till here? We'll move to adapter now. Okay. So now let's see adapter design pattern. Now what adapter says, in generally what is the use of adapter? Adapter is some device, ठीक है, or something which makes two things working, which makes two things compatible. Earlier they are not, but after using adapter, probably those two systems become compatible. The examples of adapter are, you have the converters like probably USB to type C converter, right? Now probably your device has a type C port, sorry, a USB port, okay, and your computer only accept the type C port. Now that device can't be fit in your system, right? To fit that particular device in that type C port, you need some kind of a converter, right? And that converter is nothing but the adapter. So adapter is someone who is making two incompatible chips compatible. The other example is your switchboard, right? नॉर्मली जो हमने कल एग्जांपल लिया था, नॉर्मली अगर तुम यूएस से कोई मोबाइल परचेज करते हो, प्रोबेबली पीपल गो देयर एंड बाय आईफोन, राइट? व्हेन दे कम बैक देयर चार्जर डोंट डायरेक्टली फिट इन दैट पोर्ट. सो आइदर दे नीड, अब अगर मेरे पास ये स्विच बोर्ड है, ओके, एंड माय चार्जर इज नॉट फिटिंग इनटू दिस, तो मेरे पास क्या क्या अल्टरनेटिव है? आइदर आई नीड टू जस्ट टेक आउट दिस पर्टिकुलर स्विच बोर्ड, ठीक है, एंड देन आई नीड टू रीइंस्टॉल अनदर काइंड ऑफ अ स्विच बोर्ड, लाइक दिस इज वन ऑफ द वे. बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है दैट विल गो ऑन ए टॉस, राइट? बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाएगा इन एग्जिस्टिंग सिस्टम. एंड इफ समबडी कम्स आफ्टर कि नो आई वांट टू यूज द प्रीवियस स्विच बोर्ड, you are not in a position to serve that. So adapter pattern comes handy here and it says, okay, you don't need to change yourself, I'll give you some kind of a mechanism, okay, you just plug into me and I'll take care of the transformation, or I'll take care of the exact how it will be done. Okay, so adapter comes as a middle layer, okay, which actually delegates few of the tasks, okay,
जैसे ये तुम्हारे पास है एक सिस्टम, ये तुम्हारे पास है दूसरा सिस्टम, एंड यहाँ पे अडेप्टर आता है बीच में, ठीक है। एंड अडेप्टर कहता है यू जस्ट इंटरेक्ट विथ मी, आई विल मेक श्योर द इंटरेक्शन विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम, ठीक है। सो ये तुम्हारा करंट स्विच बोर्ड है, ये तुम्हारा आईफोन का चार्जर है, एंड ये तुम्हारा अडेप्टर है। सो अडेप्टर मेक श्योर दैट द करंट इम्प्लीमेंटेशन और द लेगेसी कोड विल बी एबल टू सर्व, मतलब ये भी मैं वर्क करवा दूंगा इस पर्टिकुलर चीज से, ठीक है। जितने भी रियल एग्जांपल है, ये एडाप्टर वाला हो गया, प्रोबेबली तुम्हारे जितने भी चार्जर्स हैं, वो स्विच बोर्ड, दीज ऑल थिंग्स आर द एग्जांपल ऑफ द एडाप्टर डिजाइन पैटर्न। थ्योरेटिकल डेफिनेशन मतलब थॉट प्रोसेस क्लियर है एडाप्टर क्या है, देन विल डीप डाइव टू द इम्प्लीमेंटेशन की कैसे एडाप्टर इंप्लीमेंट होता है। अच्छा, फसाड का भी मिस द इम्प्लीमेंटेशन, राइट। फसाड का इम्प्लीमेंटेशन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। फसाड के इम्प्लीमेंटेशन में कुछ नहीं है, ठीक है। प्रोबेबली यू हैव दिस interface which have this contract method, ठीक है, which is implemented by, let's suppose, your class, okay। The client is interacting with this interface, and your class is interacting with multiple other services or other facade, ठीक है। So you have this client is talking with the interface only, and that interface is implemented by some of your matlab your class, okay, and that class in turn is talking with multiple other dependency, ठीक है, and probably that class can talk with other facade as well. So advantage of facade क्या है, सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को एब्स्ट्रैक्ट करता है, राइट। बट डिसएडवांटेज क्या है, प्रोबेबली कभी कभी क्या होता है कि फसाड में प्रोबेबली हाइड्स द कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। तो जो पर्सन कॉम्प्लेक्सिटी हाइड कर रहा है, दैट इज गोइंग टू बियर द पेन, राइट। जो इंसान बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे फसाड बहुत अच्छा काम कर रहा है, राइट। तो जो भी दुनिया में अच्छा काम करता है, दे गेट थ्रू सम पेन, राइट। सो अल्टीमेटली फसाड के साथ क्या प्रॉब्लम होता है कि अल्टीमेटली द फसाड गेट्स बिगर एंड बिगर एंड बिगर, क्योंकि सबको क्या लगता है कि फसाड का काम क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी हाइड करना। तो जितने भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं सिस्टम में, एवरीथिंग इज पुश डाउन टू फसाड। नाउ द प्रॉब्लम विद फसाड टेंड टू बिकम द गॉड क्लास, क्योंकि फसाड में सारी लोग अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करने के लिए फसाड में डाल देते हैं, और अल्टीमेटली फसाड खुद कॉम्प्लेक्स बन जाता है, एंड दैट रिजल्ट्स इन अ गॉड क्लास काइंड ऑफ अ थिंग। सो इन जनरल तुमको लाइन वहां पे ड्रॉ करना पड़ेगा कि फसाड डेफिनेटली हाइड्स द कॉम्प्लेक्सिटी, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब कुछ का कॉम्प्लेक्सिटी एक ही फसाड हाइड करे। उसके लिए यू कैन इंप्लीमेंट मल्टीपल फसाड, जैसे कि यू हैव दिस सब सिस्टम, so for this subsystem you can create a facade, for other subsystem you can create another facade, if they two facade need to talk to each other you can create third facade, or they can be invoked from one facade, ठीक है। फसाड सिंप्लीफाई करता है, बट फसाड के कोड को ओवर कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। हैव द सिंप्लीफाइड सेग्रीगेशन सो दैट फसाड विल आल्सो बी अंडर लिमिट, ठीक है। अगेन लेट्स कम टू अडेप्टर, ठीक है। so this is your A, this is B, ठीक है। this is let's suppose legacy system, and this is some new system, ठीक है। new system directly can't integrate with legacy system, so they need some kind of a mechanism to in turn transform this request to this B। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। now you have this A, okay, it will call do something, ये तुम्हारा एडेप्टर है, एडेप्टर, ओके। एंड इस क्लाइंट को चाहिए, जो तुम्हारा लेगेसी सिस्टम है, ठीक है, उसको चाहिए यहाँ पे सब मेथड डू एक्स्ट्रा। नाउ दिस एडेप्टर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसीविंग दिस डू समथिंग कॉल, ठीक है। दैट मीन्स दिस एडेप्टर शुड नो दिस डू समथिंग पार्ट, कि व्हाट डू समथिंग मीन्स, एंड एडेप्टर इन टर्न्स do some mechanism of converting this call to do extra thing and call to this B, ठीक है। एडेप्टर का रियल वर्ल्ड इंट्यूशन क्लियर है, कोई प्रॉब्लम एडेप्टर में यहां तक? ओके
Now see this. Let's suppose you have a class called same example ले लेते हैं, ठीक है? Okay, and you have some legacy plug. Okay, now this in turn is going to be something adapter. Okay, as I've already explained, the adapter is going to receive the call from this call of this do something, right? So this adapter should have some kind of an interface, right? जिसमें कि ये कॉल मेंशन होगा. एक और चीज देखो, जितने भी चीज इंटरफेस या जितने भी चीजों की बात होती है, प्रोबेबली दोज थिंग्स आर एक्चुअली ऑप्शनल. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारी चीजों को इंटरफेस में ही इंप्लीमेंट किया जाएगा या सारे लोग जो इंप्लीमेंट करते हैं वो बाय यूजिंग इंटरफेस ओनली दे इंप्लीमेंट दैट पर्टिकुलर थिंग. It's just like probably interface based programming is preferred. That's why for most of the contract we define the interface. So and the client talks in terms of the interface only, because client is talking with your system based upon some contract, and that contract is nothing but the interface. Okay, इस interface में there is a method called, let's suppose कि iPhone plug. Okay, now this adapter, okay, एक और चीज, after this adapter, right, whatever things will result into, it will be applicable to this B class as well, right? Adapter के बाद जो result आएगा, that will be compatible with this B. So that's what adapter says. ठीक है, कि adapter is going to implement this interface जो कि उसका contract है, which is used by the client or the system A in this case. Okay, and it is going to extend class B. ठीक है, अब ये क्यों होता है? Because see, whatever will be the result of this adapter class, right, is going to be type B, right? Then only it will match. Adapter का जो भी output होगा, that is going to be of type B, तभी that is going to match, right? And that's what the adapter is for. That's what the adapter extends the class B, okay, and it implements this contract which is accessible by your client A. ठीक है, clear है? Bro, can you explain with one real-time scenario, like real-time example, so that Okay. it will be easy to understand. Yeah. This, I was also there is some. ओके, एक बार इस डायग्राम को देखते हैं एंड देन इसमें जो एग्जांपल है दैट विल टेक. ठीक है, इस एग्जांपल के पास वी हैव द क्लाइंट, राइट? एक बार चारों सिस्टम क्या क्या है वो समझ लेते हैं. द क्लाइंट इज गोइंग टू रिक्वेस्ट दिस टारगेट सिस्टम, राइट? टारगेट सिस्टम इज कि तुम्हारा टाइप ए, हम लोग जो एग्जांपल में सिस्टम ए ले रहे थे, दैट इज योर टारगेट नाउ, एंड इट नीड्स टू टॉक विथ ये जो सिस्टम है, ये वाला जो सिस्टम है लास्ट सिस्टम. ठीक है, इट इज गोइंग टू टॉक विथ दिस पर्टिकुलर सिस्टम, दिस लास्ट सिस्टम, the adapter last, which is type which is this method specific request. Now this is your adapter class, the middle one, the adapter is there now, that is your adapter class. Now it need to receive the traffic or it need to receive the call from this client, right? And client talks in terms of this target. so client से जो target आया, ठीक है, या client से जो request आया, उसको it has translated to देखिए, देखो एडेप्टर को जो कॉल मिला वो कॉल क्या मिला? रिक्वेस्ट. नाउ दिस एडेप्टर ने क्या किया है? एडेप्टर ने उस कॉल को ट्रांसफॉर्म किया है एंड देन इट हैज कॉल्ड adaptee डॉट स्पेसिफिक रिक्वेस्ट. adaptee कौन है? इन विच इट नीड्स टू कन्वर्ट. ओके, एंड देन इट इज कॉलिंग adaptee डॉट स्पेसिफिक रिक्वेस्ट. इसमें उतना क्लियर नहीं, एग्जांपल में और क्लियर होगा, इस पे आते हैं. ठीक है,
जैसे देखो, you have a interface bird, right? तो bird क्या क्या कर सकता है? Probably fly and make sound, right? Now you have a sparrow which is implementing that bird, so वो fly और make sound का implementation provide कर रहा है, right? So now your sparrow is a bird which is implementing this fly and this make sound method. Now you have some method या फिर you have some interface called toy duck. मतलब toy duck मतलब कि एक probably toy है, ठीक है, which has some method, ठीक है. Now what you want to do, you actually want that bird to be adapted to that toy. मतलब bird को you are adapting to a toy. क्योंकि ले सपोज कि तुम्हारे पास टॉय कम हो गए थे, तो तुम चाह रहे हो कि विल रिप्रेजेंट दिस बर्ड एज द टॉय, ठीक है. दैट्स व्हाट दिस पर्टिकुलर क्लास इज, बर्ड अडेप्टर, ठीक है. तो ये क्लास बर्ड अडेप्टर, इसका नाम क्यों आया? बिकॉज सी अडेप्टर इज द पैटर्न नेम, सो जनरली वी अपेंड द अडेप्टर टू व्हिच ऑब्जेक्ट इट इज एट. किस ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ऑन बेसिस ऑफ दैट इट गेट्स इट्स नेम, ठीक है. दैट्स व्हाई इट हैज गॉट द नेम एज द बर्ड अडेप्टर, बिकॉज इट इज ट्रांसफॉर्मिंग द बर्ड to that toy. Okay, and why it is implementing that interface toy duck? Because the client is going to call that toy wala method, right? The bird now needs to behave like a toy. इसमें डाउट है? should I take some other example? Let's see this example now, ठीक है. So this class, let's suppose there is a class called round hole, ठीक है. इस class का simple सा functionality यह है कि any of the object that will be passed to it, it will check what is the radius. If it is radius is less than my radius, ठीक है, then probably this fits, else it won't fit, right? So now you have got a square object, right? So square object don't have anything called radius, right? So square object में radius नहीं होगा, तो how will determine कि whether that will fit to that or not, right? उस वाले hole में it will attach or not. So उसके लिए क्या किया, I have written a square adapter, ठीक है. अब ये square adapter क्या करेगा? This square adapter will change that square object to behave like a round object. Okay, this square page adapter will make that square object behave like a round object, ठीक है. That's what if you'll see, this square page adapter is extending this round page, right? Why? Because now this square page object will behave like a, इसका जो adapter का जो object होगा, that will behave like a round object. So every square page adapter का जो object होगा is a round page adapter. That's why it is extending this round page. Okay, and now if you see, this adapter is going to receive a square object. Okay, क्योंकि square page adapter क्या है? Adapter is the pattern name, and square page adapter is, it is converting or it is making the square page object adapt to round page. That's what the name is, square page adapter, ठीक है. Because it is making the square object adapt to that round object. That's what this class name is, square adapter, ठीक है. Okay, and then after, that's why you have this. If you see this, it is going to convert this square peg, right? This square peg adapter is going to convert this square peg object, right? So this is going to in turn have a square peg object जिसको वो convert करेगा, right? So that's what it is, this property called square peg. Okay, you have initialized in the constructor, and now see this method. ये जो get radius method है, right? After, okay, हाँ, यहाँ पे देखो, see this get radius method, right? This get radius method was of which? Round peg, right? Now after it is, यहाँ पे इसको डेमो में देखो, ठीक है.
you have this round hole, ठीक है. Now you have created this square peg, right? Now if we'll directly say कि whole dot fits this is probably this square object, won't be compiled, right? Because this is not going to be meant to be except this square kind of object, right? This method, this particular round hole was not implemented to receive a square object. Now what you are doing, you are calling this square adapter, okay, and you are passing this square object that you have created, okay. Now in turn, if you see, your round hole is going to fit that square object, right? क्योंकि because of this adapter. अब क्यों कर पाए ये? Because of this. Because this square page adapter was extending this round page, right? That means this square page is nothing but a round page. मतलब वो उसी का एक replacement है. Now this adapter is also a round peg. So whatever the adapter that we are creating, the result of that is actually a round page object. So that's what it is able to do this method, okay, and that's what it will be able to fit in here in this round hole. ठीक है. So अगर ये नहीं होता तो probably it won't compile it here, but अगर as you have this adapter, so in adapter you are passing this probably this square object, and now it will be able to adapt to that, because resultant is nothing but the यहाँ पे अगर देखोगे इसका resultant it again is a round peg, right? Because it is extending that. So adapter is nothing but which makes two inconsistent thing work together. ठीक है? Because of any of the reasons. मतलब either it is not working, or probably you want some extra functionality, or you want some simplified version. ठीक है? What are all the examples in the JDK for this adapter pattern? Adapter में एक और चीज होता है, just I'll highlight that. ठीक है? Probably there are two type of adapter pattern. One is the object, and the other one is the class. So this was the example of the object adapter. ठीक है? Class adapter is not so popular because it requires the multiple inheritance, and many of the languages don't support the multiple inheritance. That's why it is not so commonly used. ठीक है? Most of the time this object adapter is getting used. ठीक है? So इसलिए we don't need to go deep dive into this class based adapter. This object based adapter is fine. Okay. What are the JDK में कहाँ पर implemented है? बहुत commonly used methods हैं ये सब. जैसे probably you have this, right? Arrays dot as list, right? Arrays dot as list. क्या करता है arrays dot as list? Why you want this array dot as list method? To convert this particular array to a immutable list, so that we can use this particular thing. Immutable list, why? Because like we cannot change anything, like whatever the list we are getting, right? Like we cannot make any operation like add or remove or anything. We cannot do. So Correct. mostly the list it will be like immutable kind of thing, whatever that array dot as list gives. Correct. Immutability is definitely that feature provided. Plus, देखो, what is the most commonly used? Because see, array has some limitation, right? Array based accessing is slightly difficult. Probably you need to keep track of multiple things. Probably the size, and because array list में it can, अगर तुम्हारे पास dynamic है तो probably it can array list तुम्हारा dynamic है, it can extend to any size, right? यहाँ पे immutable है, but अगर तुम चाहते हो उसका एक mutable version या कुछ और, ठीक है? So it has multiple this get method or भी methods, right? Probably it's easier to work with the array list than normal arrays. Array में काम करना ज़्यादा आसान है या array list के साथ? What you prefer working with if you have worked in Java? Array list mostly. Array list. Mostly people use with array list. So whenever you have a type of array, you don't want to work with array. So what you want? You want a list, right? Array list you want. So now that's what this method is for. Okay? It is acting as an adapter to implement all the functionality of that list and somehow managing it with that array. So मतलब it is giving you a representation of that array list. मतलब एक array का एक array list में representation दे रहा है
with which you can use that particular stuff. Any of the methods, मतलब arrays dot as list collection में जितने भी method हैं for the different में convert करने के लिए, those all are the examples of this adapter pattern only, because it is making the client or making that particular object adapt to a different things. It makes the clients work with a probability, मतलब you are actually working with a array list, but under the hood you are operating on a array, something like this. Probably because the client has only this array and client don't want to work with this array, so the Java is provided कि ठीक है, you work on this array list and I'll have managed in the background कि how to work with that particular thing. Cool. Any doubt till here? See this. Any doubt? मैं इसमें ये दिखा रहा था कहाँ पे इसका एग्जांपल होगा. Yeah, just a second. इसका example looks good. What you type is so this example actually looks good. So probably you guys can refer to this example. That is way better than maybe on journal. Yeah. Okay. Adapter. हाँ, ये देखो arrays dot add list, and then probably you have this input string reader that which actually returns a reader. So these all things are the example of this adapter pattern. इसका एग्जांपल मैं देखता हूँ एक बार. जनरल डेप मैंने लिंक चेक नहीं किया था इस बार. इसका एग्जांपल क्या है? हाँ, see this class based adapter and the object based adapter. So class based adapter actually deals with multiple inheritance. That's what it is not supported in many of the programming language. So mostly this adapter, object adapter is getting used. The form uses Java composition. अब ये composition कैसे यूज कर रहा है? Because ये वाला जो ऑब्जेक्ट है जब मेरे पास ये अडेप्टर था, राइट, एंड दैट अडेप्टर हैज सम, जैसे ये मेरे पास स्क्वायर पेग अडेप्टर था, राइट, सो इट हैज दिस स्क्वायर ऑब्जेक्ट, राइट, जो ये स्क्वायर अडेप्टर था दैट हैव दिस स्क्वायर ऑब्जेक्ट. So this particular thing is composed into this. That's what it is, preferring the composition over the inheritance. The other things was कि इसको भी inherit करके ये काम करवा लेता. वो कैसे दिखता है एक बार वो भी देख लेते हैं. ठीक है, ये आपका ये अडेप्टर क्लास है, राइट. नाउ अडेप्टर इज व्हाट? अगर मैं अडेप्टर को ये बोलूं कि अडेप्टर ये ए है एंड ये बी है, राइट, इट इज एक्टिंग एज अ बीच का अडेप्टर है. सो अडेप्टर इज आल्सो ए एंड अडेप्टर इज आल्सो बी, राइट. देन दैट्स व्हाट इट इज एबल टू क्रिएट दिस ब्रिज. मतलब ए के रिक्वेस्ट को बी में ट्रांसफॉर्म कर पा रहा है, राइट, बिकॉज इट इज ऑफ टाइप ए एंड टाइप बी बोथ. That's what it can do the job by multiple inheritance. But वो actually बहुत सारे language में supported नहीं होता including Java. That's what this object based adapter is used. Adapter is of type B. Yes, क्योंकि इसीलिए ये adapter क्या करता है, type B, मतलब जो B है उसको extend करता है but A को compose करता है अपने अंदर. Okay. हाँ, in multiple inheritance वाला अगर if you use the way, हाँ, ultimately it is going to work with both, right? This adapter is going to work with both. So in this object based adapter pattern, it actually translates to a B. That's why it is extending B, and A को वो treat करता है as a parameter and it is composing that into itself.
ठीक है। ये वाला एग्जांपल जो ट्यूटोरियल पॉइंट का, इसमें एग्जांपल थोड़ा बेटर है, बिकॉज अर्लियर उसमें प्रॉब्लम क्या था कि बर्ड को टॉय में कोई क्यों अडेप्ट करवाना चाहेगा। रियल वर्ल्ड का अगर मैं एग्जांपल लूं, ठीक है, मतलब प्रोबेबली एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, बट वर्ड को टॉय में अडेप्ट करवाने की जरूरत क्या है। That's what I was not so keen on that particular example. ठीक है, in this example it's better. You have this media player, okay, and then you have some media adapter, ठीक है, and then this media adapter क्या कर रहा है एक बार, and you have this advanced media player, okay, and this media player is actually I guess example देखो adapter कहाँ है इसका, हाँ, so you have this media adapter, right? Media adapter is implementing this media player, okay, and then you have this, and probably based upon this audio type किस टाइप ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है वो एडवांस मीडिया प्लेयर and based upon this VLC and MP4. VLC media adapter, implement this media player, audio player implementing this media player, okay, and then client in talking with audio player dot, okay, ठीक है, हाँ, ओके, हाँ, सो ये वाला जो एग्जांपल है इसमें if you see this this audio player, right, now it can adapt to multiple type of request. जैसे ये देखो, if the type is VLC, if the type is MP4, then it is delegating this request to the VLC player, and then it is delegating the request to this MP4 player. So kind of a mix of both, probably the factory as well and the adapter as well. क्योंकि तुम्हारा जो ऑडियो है उसको किसके साथ काम करवाना है, ठीक है, on that send it is doing the adapter work, and factory इसलिए because based upon that factory it is choosing that particular stuff. Any doubt in adapter pattern? इसमें कौन सा एग्जांपल है? ओके, हाँ, ओके, ये जर्नल डेप का एक्चुअली एग्जांपल बेटर है. इट इज कन्वर्टिंग दिस बोल्ट इनटू सॉकेट है. सॉकेट इज एक्चुअली एन एडाप्टर, ठीक है, तो सॉकेट एडाप्टर को वो कर रहा है एंड क्लाइंट यूजेस सॉकेट एडाप्टर, ठीक है, सॉकेट वोल्ट वी गेट वोल्ट, ठीक है, एंड देन हाँ, ये इसका एग्जांपल इज बेटर बिकॉज इसमें क्या कर रहा है, बिकॉज द सॉकेट, राइट, the socket is actually an adapter in real world as well, and it is actually adapting to multiple voltage. जैसे तुम्हारे पास 30 watt का चार्जर है या 50 watt का चार्जर है, so that adapter is making sure that you are receiving the right voltage, because actually you are talking with that socket, right? Socket has a power supply of, let's suppose, 220 volt, but how you are going to transform it to a 10 volt or 30 volt charger, that is taken care by that adapter, जो नॉर्मल हमारा चार्जर होता है उस टाइप से. So that is the exact example of this. So I guess this general type example is better to understand in this case. ठीक है. If no question, let's end it here. Thanks everyone. Bye bye.